So this is Dhananjay here, and I just want to tell all the students before you move on to the most important slide of your presentation that जब शिवांक ने 2020 में साइन किया था नीट के लिए एंड प्रिपेयर किया था, तभी ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी या टूल नहीं था कि जहां पे समझो अगर आपको 95 परसेंटाइल पे आए, 96 पे आए। अभी शिवांक का 99 ऊपर था, उसको आंख बंद करके पता था कहाँ मिलने वाला है। बट सारे लोगों को वहां पे नहीं होते हैं, किसको 580 आता है, किसको 590 आता है, 615 आता है। इन सभी लोगों को या 350 आता है। there is an opportunity for everybody to become a doctor. However, you should know all the ways to become a doctor. Okay, so हम लोगों ने मोक्ष का एक करियर प्लानर ऐप अभी लॉन्च किया है, जिसके ऊपर हजारों लोगों ने डाउनलोड कर लिया है लास्ट 10 दिन में, 12 दिन। So I just want to tell everybody, this app will allow you to exactly know what are your chances in which college in India if you just insert your budget and the NEET score and your category. So that entire counseling process has been implemented into the mobile app so that it becomes very easy for every student. वो जो anxiety factor है, एग्जाम होने के बाद में एक दिन आराम करोगे, 2 दिन आराम करोगे, तीसरे दिन से ये चिंता में रहोगे कि मुझे कहाँ मिलने वाला है, अब मैं मेरा काउंसलिंग कब होगा। तो ये चीज का एंजाइटी 16 लाख लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन निकाला है मोक्ष ने। आई वुड एडवाइज एवरी स्टूडेंट टू जस्ट डाउनलोड दिस मोक्ष करियर प्लानर ऐप, और अभी से आपके टेस्ट सीरीज में कितने आ रहे हैं आपको पता है, 350 है, 550 है, 650 है, कौन से रेंज में हो, प्लस और माइनस 20 मार्क्स करके यू कैन स्टार्ट प्लेइंग विद दिस ऐप। पुट योर एक्चुअल जेन्युइन बजट, बिकॉज इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि जितनी मतलब 25% मोर देन 25% ऑफ सीट्स कैन बी बॉट। ओके, मैनेजमेंट सीट्स है, एनआरआई सीट्स है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जो महंगी वाली सीट्स हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में जो महंगी वाली, वो सारी यू कैन बाई इट। इनफैक्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप देखोगे तो 3 लाख रैंक वाले को भी मिलता है, और बाजू में 95 परसेंटाइल वाला बच्चा बैठा है, वो उसका बजट कम है तो वो ऐसे ही बैठा होता है काउंसलिंग में। तो ये सीन है इंडिया में। So you must understand the actual system, availability of seats, उसका एक एक कॉलेज का कट ऑफ फीस, वो सब जानकारी के लिए लेने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। हम लोगों ने कोविड पीरियड में पूरा ये रिसर्च किया, और बच्चों को जो इजीली पता चल जाए कि कौन सी कॉलेज, तो 554 कॉलेजेस विद कट ऑफ, विद फीस, with actual available chances for you to get an admission, उसके बारे में every information has been put into this मोक्ष career planner। अगर आपको या तो नीट का स्कोर ऊपर ना हो, या तो फॉर एग्जांपल आपका बजट ना हो और आपको इंडिया में ना मिल रहा है, तो यहाँ पे 150 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज जहाँ पे आप पढ़ाई करने जा सकते हो, वो प्लान बी भी अवेलेबल है, आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर सकते हो। तो विद दिस बैकग्राउंड टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, एंजाइटी लेके आने की जरूरत नहीं है। आपने 2 साल से तैयारी की है, डॉक्टर सारे बन सकते हैं, कोई रुक नहीं, किसी को रुकने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स प्लान बी नहीं है तो प्लान सी भी है, जिसको कॉम्बो मेडिकल प्रोग्राम हम दूसरे सब वेबिनार में बताएंगे। आज अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ शिवांक के ऊपर है। सो लेट्स गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिम, लेट अस गेट द टिप्स फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, एंड देन टुमारो डे आफ्टर जब भी आप नीट खत्म हो जाए आपकी, फिर शांति से we'll have lot of webinars to explain you about the alternative plans also. Thank you, Shivam. Please go on. Thank you so much, sir. So I'm moving on the very important slides. So strategy for physics and chemistry. First of all, notes, theory and question. This is very important because notes will give you the complete idea of what the chapter has or what the most important topics have. And if you listen to the teacher very carefully, he or she will, open your concepts. It is once you start learning, you'll fall in love with the process. These concepts of physics and chemistry. So I used to like physics and chemistry so much. So I still consider that I'm in a wrong field. I used to love physics. That is why. So notes are very important, theory and question. Second is module and book. For reference, if you couldn't understand the concept, it is very important. Usually for physics and chemistry, notes would do it. If you're revisiting your notes, theory and questions, you're revising, and then you're solving the questions, that would be enough. But if you're not able to grab the concept, or when you went to attempt the question, you're not able to, you're
you're going very much blank on a particular question. Then you have to open your module and book, you have to go through the text, and then you have to use it as a reference to understand something that has been mentioned in the notes. Then you will clear your concepts. This is about clearing your concepts. Then the third process is, first of all, you went to the notes. Second, if for reference you used a module or book, then you have to attempt questions. Attempt your questions according to the module of the book. And second is previous year questions. It should not be ignored. Previous year questions should not be ignored. I will be focusing on this point throughout. Note, timely revision a must. Exercise in previous year questions should be solved multiple times. For example, today I was taught optics. So I solved, this was the last lecture, and I have solved the module completely. I have gone through the notes, but I could revise it only one time because the chapter has just ended right now. So after a week, again I have to open optics and revise the notes. At least go through the notes for 1 hour or two, and I have to attempt the questions again. And after 2 weeks again, and after 4 weeks, as whatever you have planned. Because if you think that optics has been solved and the thing is over, no, it is not. Because you'll tend to forget things just after 2 days. After a week, maybe it is possible that you won't be able to solve any question. So timely revision is a must. And NCRT for physics and chemistry, I will say there's a lot of there's no clarity about what to study for what to study in NCRT for physics and chemistry. So there are questions, so you can go through the text. First of all, NEET students should only read it for concepts. No need to solve lengthy questions. So go through the physics and chemistry NCRT for concepts. They are well versed, well written. As I said, you'll fall in love with the chapter, fall in love with the subject, but don't try to solve the questions given at the back. There are very much questions, and mostly they are for IIT advanced. When you go through them, you'll come to know that it doesn't matches the level of the NEET. So it is almost like wasting your time. If you have solved your questions, you have solved your previous year questions so much that you can solve everything in the module and previous year questions, then you can go for the lengthy questions. Yes, but MCQs you have to solve from NCRT also, and you can go through the blue box in the NCRT. You know that the questions are directly from the blue box also sometimes. So physics and chemistry, this way you have to strategize.